Good morning students, and again welcome to our economics class. We continue our second chapter, Indian economy from 1950 to 1990. We completed two parts of this chapter. One is about the economic planning and second is about the agriculture sector. From today we are going to start third part of the chapter. It's about the industrial sector. In this chapter we study what is the importance of industrial sector in economy. We also study state participation or public sector, what is the meaning of private sector, public sector, and why government give importance to the public sector for the development of the economy after the independence. We also study a very important topic. It is IPR 1956, Industrial Policy Resolution 1956, and its different key features. So first we start from the industrial sector. For the any economy, industrial sector play very important role for its development. अगर हम किसी इकोनॉमिक एग्जांपल लेते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो उस इकोनॉमी की डेवलपमेंट का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी आपको गुड्स सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, इडेबल आइटम्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब जितने होगी वो कौन फिलअप कर रहा है हमारे को इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर. चाहे जब बात करें चाइना है, जापान है, यूएसए, इवन वेपन्स के एरिया के अंदर रशिया है, तो ऑल दिस सेक्टर्स, ऑल दिस कंट्री डेवलप बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर. Now what is the importance of this industrial sector? We study it under different points. The first is epicenter of economic growth. किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का जो एपिसेंटर है हमारे लिए क्या होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. जैसे किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जैसे इंडिया में बात करते हैं हमारे को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रहता है. इट विल बी सॉल्व्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. Industrial sector fulfill the need of the agriculture sector. Industrial sector fulfill the need of the domestic demand, or even industrial sector fulfill need of the industrial sector also. एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के नीड्स को भी क्या करती है, पूरा करती है. तो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का जो एपी सेंटर है वो हमारे लिए क्या होगा, इंडस्ट्री. सेकंड इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो प्रोवाइड ए बिग एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड पीपल. अगर इंडिया की बात करें तो लगभग हमारा 25-26% के आसपास जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकल के आता है. सो इट्स अ बिग सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द कंट्री, और स्पेशली द सेल्फ एम्प्लॉयड इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स. इट इज अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Source of mechanized means of farming. Yes, if our farmers like to do modernized farming, they want mechanization of their farming. They like to use more and more machines in the field of agriculture sector to increase their productivity. It depends on the development of industrial sector. It means industry and agriculture both are complementary to each other. As industrial sector develop, agriculture sector also develop in the economy. So with the development of industrial sector, need of the agriculture are also fulfilled. So agriculture sector also develop with the development of industrial sector. Next is impact dynamics of growth process. Yes, it is also helpful for the dynamic growth of the economy. In an economy, if industrial sector develop, it make the economy dynamic. Economic means it will change with the change in timing. जितना टेक्निकल रिफॉर्म्स आते हैं, टेक्निकल चेंजेस होते हैं, उसको रैपिडली बोल सकते हो, इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. पर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी डेवलप्ड इन द कंट्री. ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. एवरी कंट्री वांट दैट इट्स पीपल मस्ट बी सिविलाइज्ड. वो सिविलाइज्ड वे के अंदर अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा तो अर्बनाइजेशन डेवलप होगा, और अगर अर्बनाइजेशन डेवलप होगा तो किसी भी कंट्री के अंदर सिविलाइजेशन भी डेवलप होगा. सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, it means people have to follow the civil norms, we have to follow our duties, we have to know what are our liabilities towards society, what are our liabilities towards country. All these are comes under the civilization. So it's developed with the development of industrial sector in the economy. Infrastructural growth. If infrastructure means basic requirements or basic needs we want for the development of the economy, it's maybe relates in the economical infrastructure or either in the social infrastructure. In economic we include energy, communication, transport mainly, and while in social infrastructure we include
housing, we also include health facilities, we also include educational facilities. So for the infrastructure development of the economy, we also want to develop the industrial sector. Here again, industrial sector and infrastructure correlated with each other. अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो एफडीआई हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर विल बी मोर डेवलप्ड. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सेंट टू अ नॉन ऑफ ग्रोथ. इट मींस किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर. It will increase the industrialization in the economy, but it's also responsible for the rapid development of the nation. So I told you what are the importance of the industrial sector in any economy. Now we see state participation in the industrial development. जैसे हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में जितनी जिम्मेदारी थी, रिस्पांसिबिलिटी थी, उस समय की गवर्नमेंट ने किस पर डाल दी? पब्लिक सेक्टर में. उनका मानना था कि जो प्राइवेट सेक्टर उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, इतना हेवी इन्वेस्टमेंट्स की कैपेबिलिटीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, सो दे गिव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन टू द पब्लिक सेक्टर. Factor necessitates direct participation of the state, I mean public sector in industrial development. But before it, I like to explain what is the meaning of this public sector and private sector. What is public sector? Public sector refer to those business enterprises which are controlled and run by the government. These are largely driven by the consideration of social welfare. It means it relates with those public sectors, those sectors which are controlled, managed, operate, direct, regulated by the government for the view of social welfare, not for the profit motive. And the private sector is just opposite of it. In private sector we include all those business enterprises which are run, owned and controlled by the private sector, and they run all these for the consideration of profit maximization. तो जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो हमारे लिए क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर. उनको ऑपरेट करने का मोटिव क्या हो गया? सोशल वेलफेयर. और जिन पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है वो हमारे लिए क्या हो गया? प्राइवेट एंटरप्राइजेस. और उनको ऑपरेट करने का मोटिव क्या हो गया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो हम ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किसको प्रेफर करा? स्टेट पार्टिसिपेशन, मतलब कि पब्लिक सेक्टर को. एंड व्हाट आर द रीजंस रिस्पांसिबल फॉर इट? फर्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल. और उसमें स्पेशली बात करें लैक ऑफ कैपिटल से हमारा मीनिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर. At the time of independence, private sector was not developed in the economy and there was a lack of capital for the development of the nation or the heavy industries in the private sector. So government give responsibility of the development of heavy industries in the country to the public sector. Second, low inducement to investments. उसमें अगर बात करें इंडिया के जो मेनली पीपल से लगभग 50% से ऊपर हमारी पॉपुलेशन बीपीएल थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, इनकम लेवल बहुत कम था. सो प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं था कि वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अपना अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर पाए. At that income level of the people was very low. With the low income, their demand is also very low. When demand is low, it shows the limited size of the market. When market size of limited, it means investments also lower in the economy. Which low investment again means low income of the people, and low income means low demand of the goods and services. तो एक तरह का ये लो डिमांड और लो इनकम का विशेष सर्किल जनरेट हो गया था इकोनॉमी के अंदर. और इसको ब्रेक करने के लिए पब्लिक सेक्टर का हेवी इन्वेस्टमेंट ही अब बोल सकते हो सिंगल ऑप्शन था, एकमात्र विकल्प था उस समय गवर्नमेंट के पास. नेक्स्ट इज ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस. इन एवरी इकोनॉमी वांट इट्स ग्रोथ, but this growth must be related with the social justice. Means growth of the benefit must be given to the each and every person of the economy. There is no discrimination of the growth between male and female, between urban area and the rural area, and there is no regional disparities of the growth. So every economy want growth with social justice. It's only possible in an economy when government make or public sector make the investments in the economy. Now we come to the next important topic, IPR, Industrial Policy Resolution 1956. This policy was launched in 1956 and it was the second industrial policy of the government. Under this policy, government cleared its view about our industrial development or about the changes in the Indian economy.
It is explained on different points. The first is three-fold classification of industries. अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करा, जो इंडस्ट्रीज को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. इट मेक द थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो उसके अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी व्हिच आर टोटली रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर. इट मींस उसमें किसी भी तरह का प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा. Only government can run or operate this industry. The total number is 17. Section B, in this government include 12 industries. In these 12 industries, and their development responsibility also depends on the public sector. But government also give permission to the entry of the private sector in these 12 industries. But these are responsible only for the complementary of the public sector. Means private sector entry तो कर सकता था, पर उसको सिर्फ पब्लिक सेक्टर के कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं. उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स उसको फिलअप करने के लिए एक सिर्फ सपोर्टिंग रोल ही दिया गया था. और थर्ड गवर्नमेंट ने जो बाकी इंडस्ट्रीज को थर्ड कैटेगरी मतलब सेक्शन सी में डिवाइड कर दिया. और सेक्शन सी में जो इंडस्ट्रीज दी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी. बट साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसमें किसी भी सेक्टर के अंदर अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सकती थी. इट मींस हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को तो सब जगह परमिशन थी अपनी इंडस्ट्री डेवलप करने की, but not for the private sector. Second is industrial licensing. अब गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पर अपनी लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस देना पड़ेगा. इसके पीछे जो गवर्नमेंट का मोटिव था वो मेनली था रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. कि जो एरिया हमारे यहाँ पर कम डेवलप्ड है वहां पर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट किसी को एक लाइसेंस प्रोवाइड कर रही थी. इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं. Licensing policy of the government was to promote regional equality. Private entrepreneurs are expected to establish industry in the backward region of the country. According license and liberty issued for the backward region rather than the developed region of the country. हमें बार-बार एक चीज बताई जा रही है कि किस तरीके से गवर्नमेंट रीजनल जो डिसपैरिटीज उसको कम करने के लिए, जो एरिया कम डेवलप्ड है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट वहां पर लाइसेंस इशू कर रही थी, especially for the backward regions. Third is industrial concession. अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता है in the backward region, so government give different types of benefits to them. They are including industrial concession. इसके अंदर पहले बात करते हैं टैक्स हॉलिडे, 3 या 5 ईयर के लिए उनको टैक्स में छूट देना, subsidized power supply, free supply of land or the supply of land at the lower price, etc. So all these are points, all these are the important points of the IPR 1956. So we study all this about the development of industrial sector in our economy. In the next class we study SSI, small scale industry. Thank you.